Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to start chapter Life Process. Here we will study about excretion. Biochemical reaction constantly occur in the cell of a living organism. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं. बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, पिगमेंट्स, oxidative breakdown of glucose, and many other catabolic and anabolic reactions. Here, biochemicals, you can see the chemical reactions which are in the cell. If we will talk about the excretion, so here, after digestion of food is carried to the cell by the blood. जो भी खाना हमारी बॉडी में पचता है, डाइजेस्ट होता है, इट इज कैरिड टू द सेल. वो कहाँ लेके जाता है? सेल के पास. और वो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है, राइट तो वो कहाँ कैसे जाएगा? पूरी पूरी बॉडी के पार्ट तक कैसे जाएगा? इट इज बाय द हेल्प ऑफ ब्लड. As we eat food, so this move to the stomach, and here it reacts with the blood. This blood will flow through all the body and then it moves to the cell. कहाँ पर जाता है ये? हर बॉडी के सेल के पास. Now inside the cell energy is produced. जो भी सेल होता है, बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, जहाँ पर भी ब्लड पहुँचता है, उस सेल में जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है. और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द फूड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. बट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सब्सटेंस इट ऑल्सो प्रोड्यूस. ATP तो बनाता ही बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. These are not good for our body. They are very harmful products. So these products will allowed to accumulate in the body, may cause serious damage, sometimes leading to the death. अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं. Therefore, they need to be eliminated from the body. बाहर निकलने ही निकलने चाहिए. So, the blood carries them to the kidney. तो अब जितने भी ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हमारी किडनी में. As it moves to the kidney. The kidney filter the blood. अब यहाँ पर जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करना शुरू करती है और इन वेस्ट प्रोडक्ट को किसकी फॉर्म में ले आती है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. Here we are now going to study about the excretory system in human being includes, that is, first, pair of kidney. From the kidneys, two thin tubes come out called as ureter. These are pair of ureters. Both the ureters open in a bag-like organ. We call that organ as urinary bladder. The urinary bladder open into a small tube-like structure which is called urethra. Here, the human excretory system, we say this consists of all these parts. Again, pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Kidney, ureter, urinary bladder and urethra. The artery that carries blood to the kidney, it is called renal artery. Again, जो भी आर्टरी ब्लड से किडनी तक जाती है, जितना भी सब्सटेंस होते हैं उसको लेके आती है, वो कौन सी होती है? रेनल आर्टरी. दिस इज रेनल आर्टरी. द वीन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनी, इट इज कॉल्ड रेनल वीन. जो भी ब्लड अब कहाँ से जाएगा? किडनी से वापस जाएगा, उसको हम बोलेंगे रेनल वीन. Let us have a look at the vertical section of the kidney. So this is the complete diagram of kidney. Here we will see that what are the parts of kidney. The triangular region,
hair which is formed upside, that is called kidney medulla. The region outside the medulla, वो रीजन जो मेडुला से बाहर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं किडनी कॉर्टेक्स. अगेन, जो भी ये ट्रेंगुलर रीजन है उसको बोलते हैं किडनी मेडुला. और इसको छोड़ के जो पूरा पोर्शन बना हुआ है आउटसाइड दिस मेडुला, दैट इज कॉल्ड किडनी कॉर्टेक्स. दिस इज रेनल आर्टरी, रेनल वीन, द रीजन वेयर द यूरेटर बिगिन. जहाँ से यूरेटर बनना शुरू होता है, शुरू होता है, उसको बोलते हैं रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस. देन वी हैव यूरेटर. नाउ किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स. कैसे होती हैं ये? बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं. situated at the back side of abdomen, one on either side of vertebral column. Basic filtration unit in the kidney is a cluster of thin walled capillary. Here, let's understand this. These all small thin tubes which we are looking here, cluster of thin walled capillaries. Capillaries which are very thin tubes called as nephrons. We call these tubes as nephrons. So now let's understand the structure of nephron. Here you can say the cup shaped upper end. ऊपर की तरफ जो ये अपर एंड जो कप शेप की तरफ तरीके से बना हुआ है, वी कॉल्ड इट बोमन कैप्सूल. द क्वाइल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल. TUBULE. द डक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. जो ये डक्ट बनी हुई है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. द रेनल आर्टरी एंटर द बोमन कैप्सूल. रेनल आर्टरी क्या करती है? एंटर करती है. कहाँ एंटर करती है? बोमन कैप्सूल में. एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और बहुत सारी कैपिलरीज बनाती है. इनको बोलते हैं हम रेनल आर्टरी. राइट. वी कॉल्ड इट ग्लोमेरुलस. क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस. हियर वी से द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. हमने कहा जो नेफ्रॉन होता है उसके चारों तरफ बहुत सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं. These are. Let us see the process of urine formation. तो अब देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है. So here blood contain urea, ammonia, uric acid, water and other useful substances. This blood entered the glomerulus through the renal artery. ये जो ब्लड होता है, हमने ये देखा था कि किडनी के अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा किससे आता है? रेनल आर्टरी से आता है. तो ये किडनी के अंदर कैसे एंटर करेगा? रेनल आर्टरी से. हियर इट एंटर थ्रू इज व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इट गेट फिल्टर. अब ये किस में एंटर करेगा? ग्लोमेरुलस में. और ये यहाँ पर क्या होगा? फिल्टर होगा. यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर और जितने भी सब्सटेंसेस होंगे दे गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड एंड दिस फ्लूइड कलेक्ट इन द बोमन कैप्सूल. और ये सारे के सारे किस में कलेक्ट हो जाएंगे? बोमन कैप्सूल में. राइट. हियर दिस फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट बैक टू द हार्ट थ्रू द रेनल वेन. किडनी से जो ब्लड बाहर निकलता है उसको बोलते हैं रेनल वेन. राइट. तो जितना भी फिल्टर्ड ब्लड होगा वो किसके थ्रू जाएगा? रेनल वेन्स के थ्रू जाएगा. एंड द रिमेनिंग दैट मूव्स टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यू कैन से इट पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल. किसमें से पास करेगा? ये ट्यूब्यूल से. In this tubule, reabsorption of water and useful molecules take place. इस ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और यूजफुल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं. राइट. सो द रिमेनिंग फ्लूइड कंटेनिंग द वेस्ट फॉर्म द यूरिन विच passes through the tubule and enter the collecting duct. Now it passes to the duct. Here
Eventually, the urine enter the ureter. Now, the urine enter the ureter and carries to the urinary bladder. Now, as it moves to the ureter and then to the urinary bladder. It is stored in the urinary bladder. अब ये कहाँ पर होगा? Urinary bladder के अंदर होगा, and from there it is thrown out through the urethra. Here we have root hairs, surface cell, cortex cell, and xylem. Water and minerals. Through the root, here water first enter the surface cell. As it moves, the surface cell become turgid and exert pressure on the neighbor's cortex cell. This pressure is called root pressure. Because of this, water and minerals are pushed into the neighboring cell. Now, the neighboring cell become turgid and exert pressure on the adjacent cells. Thus, the mineral and the water reach the xylem and it pushed further and further. This steady movement creates a column of water that is steadily pushed upward. आप देख रहे हैं कि जितना भी वाटर होगा वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा. So this is all about. Here, what we studied about the excretory system. So in the excretory system, we say that it consists of pair of kidney. हमने ये पढ़ा कि जो भी excretory system होता है वो किससे consist होता है? किडनी के पार्ट से. ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर जो हमारा थ्योरी पार्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जो ये होम्योस्टैटिक प्रोसेस करता है ये किसके हेल्प से करता है? विद द टू मेन स्टेडी स्टेट. फर्स्ट दैट इज excretion and second that is osmoregulation. Here when we talk about excretion, so excretion is a biological process. We say excretion, it's a biological process by which an organisms get rid of excess of toxic waste. जितना भी टॉक्सिक वेस्ट होता है वो बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलना शुरू हो जाता है. इफ allowed to accumulate, these product of organism cells would generally be harmful. अभी हमने कहा कि जो भी हमारे बॉडी में खाना बनेगा उससे जितनी एनर्जी होगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या करेगी? जितना भी वेस्ट होगा वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा. सो दैट वी नीड टू रिमूव इट. सो हेयर वी नीड टू इजेक्ट इट. बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? इजेक्शन होना चाहिए. Egestion, we can say it is the removal of undigested food, right? Osmoregulation, it is a process that maintain the amount of water and proper ionic balance in the body fluids. It maintain a constant osmotic condition in the body by regulating the water content and solute concentration of the body fluid. Here, what is the importance? What is the importance of excretion? किस लिए जरूरी है excretion? So what we say that excretion remove the unwanted product. Unwanted जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते, उन अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स को निकालने का काम कौन करता है? एक्सक्रीशन. सेकेंड, एक्सक्रीशन रिमूव मैनी टॉक्सिक and chemical substances here which damage the cell. ऐसे substances जो हमारी सेल को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं. Excretion and osmoregulation regulate the ionic concentration of the body fluid.
हमारी बॉडी फ्लूइड में जितना भी आयनिक कंसंट्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एक्सक्रीशन। इट रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। अभी हमने सीखा था कि पानी की कितना अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो बाय द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। Excretion, it is very important process in regulating the pH वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, राइट। फ्लूइड के अंदर कितना pH है उसको मेंटेन करने के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्सक्रीशन की, राइट। सो हियर व्हाट वी स्टडीड, एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा? जस्ट अ मिनट, लेट्स have a recap here. Here we are saying from this excretion, what we studied, that we have two pairs of kidney. We have here two pairs of kidneys, like they are just being like, and it have a pair of ureter. So this, the amount of unwanted substance passes through the ureter, right, and then to the urethra, right, urinary bladder, urinary bladder, and then to the urethra. The two kidneys, they are located toward the back of the lower back of the abdominal cavity. Abdominal cavity के पीछे वाले हिस्से में kidneys present होती हैं. One on the either side of the backbone. Left kidney is slightly larger than the another one, right? The blood from the aorta enter into the kidney with the renal artery. हमने यही पढ़ा कि renal artery से क्या करती है, जो भी ब्लड होता है वो कहाँ एंटर करता है? किडनी में, राइट। सो एज इट मूव्स एंड रिटर्न टू द पोस्टीरियर वेना cava through renal veins. Here, urine that is formed in the kidney passes by a pair of ureter to the bladder where it is stored until it is released via the urethra, right? Here we say there are two kidney in human being. Each kidney is, we say it is purplish brown. It is slightly sorry, flattened and shape somehow we can say it is a shape of rajma bean. कैसी शेप होती है इसकी? राजमा बीन की शेप की होती है, राइट। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, about 6 centimeter long, 6 centimeter thick you can say, and weight is nearly, it is 150 ग्राम। जो किडनी होती है उसका जो वेट होता है वो होता है nearly 150. Internally, a kidney is made of numerous microscopic excretory units, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। It is made of nephrons, right? So nephron is, you can see, it is a structure and function unit of excretion. Each kidney contain million of nephrons, right? Now let's understand structure and function of nephron. Let's understand the structure, कैसे स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का और वो कैसे काम करता है। तो अभी आपने देखा कि जो नेफ्रॉन होता है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। Here what we observe, each nephron has a cup shaped upper end. You can say this shape, this is a cup shape
like this, right? It is a cup shaped apparent which we called Bowman's capsule. It contains a number of blood capillaries. What we call them? We call them glomerulus. The blood entering into the glomerulus carries waste materials which are filtered out. ये जहां पर भी filtration का काम होता है, filtration of blood, you can say that only carries out. It is in this Bowman capsule, right? The blood entering into the glomerulus carries waste material which are filtered out in the capsule. Filtration is possible because the wall of glomerulus capillaries and a small molecule in the blood to pass through them, because it have a selective permeable membrane, right? So it has very thin and are selectively permeable. This property of membrane allow water and small molecule in the blood to pass through them. इसके अंदर से जितना भी water हो सकता है, mineral हो सकता है, वो pass हो जाता है. The blood free from these materials goes into the renal vein. जो भी renal vein होती है उसमें से क्या करता है, ये pass करता है, right? Now we have this shape as U-tube, like this. Right? Now we are saying that जो भी waste material होता है वो filter out हो जाता है. The fluid which containing waste material is forced out through the glomerular capillaries in the Bowman's capsule. The filtered out fluid is known as, जो filter out हो जाता है उसको बोलते हैं glomerular filtrate, which contain sodium, potassium and chloride ion, right? Now Bowman capsule lead into a long tubular structure into which the glomerular filtrate moves away. The tubular structure is convoluted, twisted, folded and has a U-turn before meeting the collecting duct. Here we have a collecting duct. Urine collecting duct, right? These around it, this U-tube, we have blood capillaries, right? So the material reabsorbed are they are glucose, amino acids. The fluid reaching the end of the collecting duct, it is called urine, right? The urine, we can say it is a fluid and dissolved waste substance excreted by the kidney. Human urine, you can say that contain about 95% of water and 5% you can say it have nitrogenous substance and very few other substances, right? So here, major process in the formation of urine, that is first ultrafiltration of blood, second selective reabsorption
of substances. Secretion of substances into the filtrate. So this is the whole process. You need to revise it. Thank you. Bye bye.